Hello and welcome to Red Sports and welcome to Domestic Adda. Syed Mushtaq Ali Trophy अब खत्म हो चुका है. Mumbai have added a new trophy to their cabinet by defeating Himachal Pradesh in the final. A good final that went to the last over. I am joined by Abhinandan Nahata and Kaushik Kashyap to discuss the team of the tournament. काफी अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस देखने को मिले हैं. काफी इंडिविजुअल आउटिंग्स देखने को मिले हैं. भले टीम ने अच्छा नहीं किया बट प्लेयर्स ने अच्छा किया है. उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस एपिसोड में. अगर और आपको अगर कोई पॉइंट्स आपका टीम ऑफ द टूर्नामेंट या आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे ट्विटर में फेसबुक पे हैशटैग डोमेस्टिक अड्डा यूज कीजिए और अपने सवाल अपने पॉइंट्स अपने टीम ऑफ द टूर्नामेंट हमारे साथ शेयर कीजिए और हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे इस एपिसोड में. तो कौशिक, अभिनंदन, लास्ट फाइनल अच्छा हुआ. मुंबई ने जीत लिया. काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी वहां पे थे. इतना हाई स्कोरिंग फाइनल नहीं था पर फिर भी लास्ट ओवर तक गया. सो योर थॉट्स ऑन दैट फाइनल? I think it was always going to be tough for for Himachal Pradesh, considering the depth in batting that Mumbai had. Or Mumbai overall unit काफी strong थी. So I always felt that if Himachal is batting first, 150 and above is the only way they can actually win. It was just they were delaying the inevitable with the bowling they had and the way they fielded and they bowled. But it was obvious that one or the other batter from Mumbai will try to hold on and cross the line. So Right. I think they lost it in the first inning itself. Yeah, true. I mean, the batting was not that great by Himachal. I mean, none of their main players clicked on that day. Of course, a good bowling show by Mumbai and especially Tanush Kotiar, who won the Man of the Match award as well. I'll go to Kaushik here. Kaushik, your thoughts on the final? कैसा लगा? हाँ फाइनल थोड़ा वन साइडेड ही बोलेंगे. हाँ वो लास्ट तक गया बट इट वाज अ बिट वन साइडेड बिकॉज इट वाज एक्सपेक्टेड बिकॉज मुंबई आल्सो वन द टॉस. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दे आल्सो वन द टॉस एंड यूज्ड द कंडीशंस वेल. एंड व्हेन एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट देश पांडे एंड ऑल, जो भी मुलानी वगैरह करेंगे मिड ओवर्स में, मैंने बोला था कि दैट मोहित अवस्थी का जो इन डकर आता है नए बॉल के साथ इन सीम होके जो अंदर आता है वो बहुत डिफिकल्ट होगा. एंड पहला विकेट ही वैसा ही था एलबीडब्ल्यू. सो जो नए बॉल से हो गया फिर के 5 विकेट चले गए बहुत जल्दी. देन हिमाचल कुडंट को मतलब वापस नहीं आ सके गेम में क्योंकि आकाश वर्षित भी बाद में आउट हो गए. हाँ, देयर वाज अ लिटिल कैमियो एट द एंड फ्रॉम मयंक डागर एंड ऑल बट आई थिंक इट वाज नॉट इनफ. हाँ, आई थिंक मयंक डागर ने ट्राई किया उस टोटल को थोड़ा सा डिफेंडेबल बनाने का. इवन बॉलिंग वाइज भी उन्होंने अच्छा किया बट जब आप कैच ड्रॉप करते हो 19 के 18 ओवर में शायद वो कैच ड्रॉप था सरफराज का अभिनय सिंह के द्वारा. बट उसके बाद आना बहुत मुश्किल हो जाता है वापस आप जब एक इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर का कैच ड्रॉप करते हो. बट कुडोज टू मुंबई फॉर विनिंग दिस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी. हमारे तरफ से सारे प्लेयर्स को कांग्रेचुलेशन भी और काफी अच्छे परफॉर्मेंसेस. मुंबई की जो ये टीम है, पावर पैक टीम है, हमने डिस्कस भी किया था और इवन प्रीव्यू में हमने तनुष कोटियाल के बारे में एक क्वेश्चन भी था. जोयदा ने उनके बारे में भी बोला था कि सच अ प्रॉमिसिंग टैलेंट बैटिंग एंड बॉलिंग वाइज. तो बैटिंग एंड बॉलिंग वाइज दोनों में तनुष कोटियाल का एक अच्छा एक योगदान बोल सकते हैं रहा था. बट बात आती है अब टीम ऑफ द टूर्नामेंट की. अभिनंदन, कौशिक, स्टार्ट करें ये डिस्कशन. सवाल आए हुए हमारे पास तो सवाल हम धीरे धीरे लेते रहेंगे. बट हम लोग स्टार्ट करते हैं टीम ऑफ द टूर्नामेंट. ओपनर्स कौन कौन रहेंगे तुम दोनों के? क्योंकि काफी मतलब ओपनिंग स्लॉट टी20 में इतना क्रूशल है टी20 फॉर्मेट में और जबरदस्त परफॉर्मेंसेस भी देखने को मिले. नॉट इन टर्म्स ऑफ वेरी हाई स्कोरिंग मार्जिन बट जिस हिसाब से सारे डोमेस्टिक टीम्स ने अपना एक नया अप्रोच चुना है कि जाके एटलीस्ट एक एग्रेसिव बल्लेबाज रहेगा अब तो वो काफी एक अच्छा इनिशिएटिव रहा है मेजॉरिटी ऑफ टीम्स की तरफ से. बट रही बात टीम ऑफ द टूर्नामेंट की तो आप दोनों के कौन से रहेंगे वो दोनों? आई स्टार्ट विद अभिषेक. अभिनंदन. तो थैंक्स शुभन. मेरे हिसाब से शॉ समत व्यास रहेंगे मेरे ओपनर्स. आई नो समत व्यास ने नंबर 3 पे बैटिंग की है बट सच इज द रोल. नंबर 3 एंड ओपनर्स आर ऑलमोस्ट हेड टू हेड टुगेदर. समत व्यास कई बार इस पोजीशन में आए थे जो फर्स्ट ओवर में ही आ गए थे बैटिंग करने. And with the and also the fact that is not only in this match but last 2-3 match से the middle order names जो उभर के आ रहे हैं उसके वजह से भी I wanted to get more middle order players in the 11. So इसीलिए भी मैंने समत व्यास को ओपनिंग चुना है.
ऑफ कोर्स समझ गया। सात मैच में 314 रन, एवरेज ऑफ 52। मेरे पास अभी स्ट्राइक रेट का स्टैट्स नहीं है, बट ही हैज बीन प्रीटी इंप्रेसिव। लंबे लंबे छक्के मारे, काफी आई कैचिंग स्ट्रोक्स खेले हैं समझ गया इसने, और ऑफ कोर्स एक आईपीएल का ऑडिशन भी उन्होंने दिया है। एंड आई एम प्रीटी श्योर इस बार टीम्स इंटरेस्टेड होगी समझ गया पे, क्योंकि जिस Yeah. हिसाब का उन्होंने पावर गेम दिखाया है, काफी काफी इंप्रेसिव। जो छक्के उन्होंने मारे हैं, जो शॉट्स उन्होंने खेले हैं, काफी अग्रेसिव इंटेंट, काफी गुड पावर हिटिंग हमें देखने को मिला है। कौशिक, तुम्हारा दो ओपनर्स कौन से रहेंगे टीम ऑफ द टूर्नामेंट? मेरे दो ओपनर्स हैं पृथ्वी शॉ एंड प्रभ सिमरन, और बिकॉज विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं एंड ही प्लेड कपल ऑफ गुड इनिंग्स इन द नॉकआउट्स एंड 300 के ऊपर रन एंड सच अ हाई स्ट्राइक रेट। वो बहुत ही मतलब अच्छा परफॉर्मेंस था मेरे ख्याल से। एंड along with him, Prabh Simran and Prithvi Shaw. Prithvi Shaw almost, yeah, he couldn't do much, but still he was giving some good starts at the later half of the tournament. But जो group stage में उन्होंने performance दिया, I think that played a huge role behind this Mumbai's campaign. Of course, and even Prab Simran, very impressive tournament for him. Prab Simran third highest run scorer, as a third highest run scorer finish किया उन्होंने 10 मैचेस में। 9 इनिंग्स में उन्होंने बैटिंग की है, 320 रन मारे एट एन एवरेज ऑफ 53.33, जो कि काफी एक कंसिस्टेंसी जो उन्होंने दिखाई है, दैट वाज प्रीटी इंप्रेसिव। क्योंकि प्रभ सिमरन का अभी तक का जो करियर रहा है इंप्रेसिव रहा है। सब जानते हैं कि पावर हिटर है, अच्छे स्ट्रोक्स लगा सकते हैं, बट वो कंसिस्टेंसी लेवल नहीं आई थी। और पृथ्वी शॉ मतलब उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। हाँ कौशिक। हाँ, तो बहुत सारे नाम है बिकॉज बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट था, बहुत सारी टीम भी है। एंड ऋतुराज मेड 2 सेंचुरीज ओपनिंग द इनिंग्स, सो ही इज आल्सो मतलब आते हैं। ही इज नॉट इन द 11 नाउ, बट he was also very close. It was very difficult to left him out. And also someone like Abhishek Sharma जो bowling भी करते हैं, so वो भी थे राइट, मेरे। अभिषेक का तो काफी काफी इंप्रेसिव हाँ टूर्नामेंट किया है। हाँ, वो भी मेरे दिमाग में थे। so yeah, these two guys deserve a mention at least. एब्सोल्युटली। एंड Same. पृथ्वी शॉ, जैसे मैं बोल रहा था, 10 मैचेस में 332 रन, और उनके स्ट्राइक रेट को लेकर तो कभी डाउट नहीं रहा है। अराउंड 170 180 का में रहा है उनका स्ट्राइक रेट इस सीजन। कंसिस्टेंसी लेवल ऑफ कोर्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते पृथ्वी शॉ जैसे प्लेयर से, जो कि आके आपके अगर वो 6 ओवर टिकते हैं, हम लोग जो ईडन Irish गार्डन cricket. में मौजूद, हाँ, हम लोग जो जितने भी लोग ईडन गार्डन में मौजूद थे, कमेंटेटर्स हो, वहाँ पे आईपीएल स्काउट्स हो, सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी शॉ अगर 6 ओवर टिक जाते हैं तो वो मैच उस दिन उसी टीम को मैच जीतना होता है, क्योंकि इस तरह का इम्पैक्ट रहा है, रहता है उनका मैच में। तो पृथ्वी शॉ ऑब्वियसली स्पेशल प्लेयर, और काफी कॉन्फिडेंस भी मिलेगा उनको इस टूर्नामेंट के बाद से। अभिनंदन, मैं तुम पे आ जाता हूँ। नंबर 3 पिक कौन सा रहेगा तुम्हारा? तुमने क्योंकि समर व्यास को एज एन ओपनर पिक किया था। मेरे लिए तिलक वर्मा रहेंगे नंबर 3 पे। सो आई नो यू आस्क्ड जस्ट नंबर 3, पर मैं ना एक्चुअली नंबर 3, 4 एंड 5 को साथ में बोलना चाहता हूँ। बोलो प्लीज। नंबर 3 इज तिलक वर्मा, नंबर 4 रजत पाटीदार, और नंबर 5 मोहम्मद अजहरुद्दीन। इन लोगों को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि व्हाट आई फील इज दीस पीपल कैन बैट एनीवेयर. The second thing is they complement each other in terms of their strengths. रजत पाटीदार इज गुड अगेंस्ट पेसर्स, तो अगर कोई अर्ली विकेट गिरता है तो रजत पाटीदार को भेज सकते हो आप नंबर 3 पे, जो आरसीबी के लिए वो कर सकते हैं रोल. एंड व्हेन इट कम्स टू बैंगिंग, आई मीन ऐसा है कि इफ इट्स अ स्पिनिंग पिच और आपको एक लेफ्ट हैंडर चाहिए टू नेगेट दोज लेग स्पिनर्स, देन यू हैव द तिलक वर्मा's इंक्लूजन एट नंबर 3. मोहम्मद अजहरुद्दीन और जितेश शर्मा, आई वांटेड टू मेंशन जितेश शर्मा क्योंकि उनका एक नाम था जिनको मैं लेना चाहता था, बट देन आई थॉट इफ अगेन वो एक आईपीएल प्लेयर है एंड पीपल नो हिम वेल. मोहम्मद अजहरुद्दीन हैज बीन कंसिस्टेंट for Kerala across T20 and the Vijay Hazare Trophy tournaments etc. So वो एक ऐसे खिलाड़ी है जो उभर के आ रहे हैं. His hitting skills against pacers have increased got better, I would say. तो वो एक ऐसे प्लेयर है whom we can look out for, and he was a part of RCB by the way last time. So I don't know अब इस बार RCB रिलीज करेंगे या नहीं, but he's one of the players to look out for. नहीं है वो उससे कौन से पहले वाला का? सीजन में। हाँ, so I उससे mean पहले वाला देखते हैं उसके probably पहले one वाले season, season में। yeah, probably one season back, yeah. नहीं, होता है कोविड के सीजन्स में सारे टीम्स के नाम कंफ्यूज हो गए, कौन खेल रहा है कौन नहीं रहा है। कौशिक, तुम्हारे नंबर 3 4 5 कौन रहेंगे? मेरे 3 तो थे समर व्यास, वो हाँ, हम लोग बात कर चुके हैं बिकॉज इतने सारे राइट। रन एंड स्ट्राइक रेट मैं मेंशन कर दे रहा हूँ 177 के आसपास का स्ट्राइक रेट, सो दैट्स अ ह्यूज इन मतलब बहुत बड़ा टूर्नामेंट उनका रहा.
एंड उसके बाद आई विल से पाटीदार का भी बहुत ही इम्प्रेसिव सीजन था। बहुत सारे रन बनाए वो। टीम इंडिया से ज्वाइन किए, थोड़ा लेट ज्वाइन किए इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जितना मुझे याद है। और पाटीदार का भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। वो 4 पे मैं रख रहा हूँ, वो भी कहीं भी बैट कर सकते हैं, जैसे अभिनंदन भाई ने मेंशन किया हाँ कि वी नीड प्लेयर्स हु कैन बैट एनीवेयर। तो और हाँ एक हाँ। राइट हैंडर और जो पेस को भी मार सकते हैं, स्पिन को भी मार सकते हैं। एंड पाटीदार का मैं बोल देता हूँ 272 रन्स एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 179, सो दैट्स अ ह्यूज। पटीदार इज अ डिफरेंट क्लास ऑल हाँ, टुगेदर। मतलब अभी डोमेस्टिक में आप उनको मतलब रेड बॉल देखे, व्हाइट बॉल हाँ, देखे, मतलब लुक्स की अभी वो रेडी है, वो जा रहे हैं, एक स्टेप एक्स्ट्रा उन्होंने ले लिया है। बट बट दिस बट दिस स्ट्राइक रेट बिट मतलब थोड़ा सरप्राइजिंग रहा मेरे लिए, बिकॉज ही इज अ बिट काइंड ऑफ एंकर प्लेयर। मैक्सिमम 140 145 जैसे प्लेयर ऐसे ऐसे स्ट्राइक रेट से कंफर्टेबल रहते हैं एटलीस्ट। हाँ बट दिस टाइम वो धागा खोल दिया, वो बोलूंगा मैं। correct। एंड अनदर द नंबर 5 तिलक वर्मा क्योंकि तिलक वर्मा वो एक्सीलेंट एक्सीलेंट हाँ, आउटिंग फॉर। वो पोजीशन मैं इसलिए रख रहा हूँ उनके लिए पर्टिकुलरली, क्योंकि 3 विकेट गिरते हैं अक्सर। जल्दी अगर गिर जाते देन यू नीड समवन लाइक तिलक वर्मा who comes to who comes to okay who comes to bat at 5 बैटिंग करने आए 3 डाउन, अगर जल्दी आउट हो जाए तो तिलक वर्मा कैन कम इन एंड ही इज द मैन ऑफ क्राइसिस फॉर पता नहीं हाउ मेनी टाइम फॉर हैदराबाद, सो ही इज माय नंबर 5। नहीं, तिलक तिलक वर्मा ऑफ कोर्स 3 या 4 कंसेक्यूटिव हाफ सेंचुरीज मारे थे उन्होंने इस सीजन। और जब भी मतलब हैदराबाद का टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता था, तो वो तिलक वर्मा ही रहते थे जो उनको कॉम्पिटिटिव एक स्कोर तक ले जाते थे। बट सरप्राइजिंगली आप लोगों ने यश धोल का नाम नहीं लिया। इसमें एनी एनी पर्टिकुलर रीजन वहां पे, क्योंकि एज हाईएस्ट स्कोरर फिनिश किया है उन्होंने इस टूर्नामेंट में। वो लास्ट मैच में जो हार गए थे उसके वजह से तो नहीं? नहीं एक्चुअली सो दिस आई थिंक मोहसिन ने भी एक बार मेंशन किया था कृष्णा का नाम, राइट? हाँ। सो among the anchors who played in this tournament, Yash Dul was the best anchor. There were three, I mean, there were four players whom I wanted to name in the middle order for the हम्म। season. One was Yash Dul, second was Jitesh Sharma, the third was Prerak Mankad, and fourth was Shivam Dubey. Uh, राइट he- uh, why Shubham Dubey? Shubham Dubey was the second best after Yash Dul in terms of anchoring the innings. Remember, Dubey was actually batting at 5 and 6 for Mumbai. So whenever he got a chance to bat, it was almost a very bad situation. And राइट उन्होंने वहां से 2-3 मैच जिताए हैं मुंबई को. राइट तो that's the reason why I wanted these four people, but then अपने पास talent इतना है, and the amount of the number of players around in terms of, like for example Tilak Verma, his strike rate is amazing, but उन्होंने इस season anchor का role किया. So you राइट। have those dual role players. So why do you want to actually go to a player who's just an anchor? कौशिक, योर थॉट्स ऑन यश धोल? हाँ, यशडुल इज रॉ आई थिंक, बट एट पहला ही सीजन था, तो वो देखा जाए तो फिर भी बहुत अच्छा कर गए। इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, बट आई गेस दिस प्लेयर्स दिस जो लिस्ट हम लोगों ने बनाया है मिडल ऑर्डर का, वो आई थिंक दे आर हैव बीन द पीपल फॉर क्राइसिस, वो टीम के अंडर प्रेशर में खेल सकते हैं। यशडुल दिखा वो प्रेशर में थोड़ा वो हो गए। हाँ, एक मैच जीता है वो नीतीश राणा के साथ वो पार्टनरशिप, बट ही स्टिल हैड नीतीश राणा। कोई फ्लॉ नहीं है, दिस नो फ्लॉ, but just only this guys are a bit level high. एब्सोल्युटली यार। और मेरे को काफी ट्विटर में क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आप आईपीएल के न्यूज़ दो, आईपीएल के न्यूज़ दो। मैं एक न्यूज़ दे देता हूँ रिलेटेड टू यशदुल। दिल्ली कैपिटल्स इज रिटेनिंग यशदुल 100%। आप ये जो भी दिल्ली कैपिटल्स के फैंस हैं, आप लिख लीजिए, यशदुल इज बीइंग रिटेन्ड बाय दिल्ली कैपिटल्स। तो ये न्यूज़ मैं अभी रिवील कर देता हूँ यहाँ पे। जो भी देख रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स के फैंस, तो खुश होंगे काफी, क्योंकि अच्छा इम्पैक्ट रहा है। और मे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि बीइंग अ लोकल बॉय उनको चांसेस मिले अब नेक्स्ट सीजन में। तो यशदुल is being retained by Delhi Capitals। सेफ अब खेल आ जाते गए, हैं नेक्स्ट। हाँ सेफ खेल गए शुभेंद्र, सेफ खेल गए। नहीं, एनीवे सेफ। अभी देखो सेप्टेम्बर, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ अभी न्यूज, मैं ये भी रिवील कर देता हूँ कि क्यों नहीं कर रहा हूँ। नवंबर 15 तक अभी डेट है, जो रिटेंशन का विंडो है, नवंबर 15 तक इनको फाइनलाइज लिस्ट देना है। नवंबर 15 में सपोज मैं बोल रहा हूँ आज बीइंग, आज इन्होंने सीएसके का जर्सी पहना है, तो मैं सीएसके का एग्जांपल लेता हूँ।
सपोज सीएसके आज बोल रही है कि रविंद्र जडेजा को वो रिटेन करना चाहती है, जो कि मेरी बात हुई है उनके ऑफिशियल से, मैंने ट्वीट भी डाले हैं 2-3 कि रविंद्र जडेजा सीएसके इंटेंट, सीएसके वांट टू रिटेन रविंद्र जडेजा। काफी अभी बातचीत चल रही है कि वो रिटेन करेंगे तो जडेजा का क्या फ्यूचर रहेगा। बट मैं फाइनली मतलब 100% मैं नहीं कह सकता कि सीएसके विल रिटेन जडेजा, क्योंकि 15 तारीख तक का टाइम है। अगर जडेजा को लगता है कि वो छोड़ेंगे, छोड़ना चाहते हैं, ही वांट्स टू ट्राई समथिंग एल्स आफ्टर स्पेंडिंग सो मेनी इयर्स विद सीएसके, तो वही बात है कि अभी तक साइंड एंड डिलीवर्ड नहीं हुआ है। 15 तारीख को जब एनवेलप चला जाएगा कि दीज आर द लिस्ट, तब हम जाके कुछ फाइनल बोल सकते हैं। वरना एज जो फुटबॉल फैंस होंगे उनको पता होगा कि ट्रांसफर विंडोज में कितने लास्ट मिनट चेंजेस होते हैं। कोई प्लेयर यहाँ पे मेडिकल देने चला गया बट उसके बाद किसी और क्लब में साइन कर रहा है, तो वो चीज अभी आईपीएल के इकोसिस्टम में भी धीरे धीरे आएगी। तो अनलेस एंड अनटिल देयर इज साइंड और डॉटेड लाइंस, हम लोग कुछ कह नहीं सकते। शिखर धवन का जो मैंने न्यूज कहा था वो साइन था डॉटेड लाइंस पे, इसीलिए मैंने ब्रेक कर दिया था वो। बट एनीवे, लेट्स मूव टू द नंबर 6 प्लेयर अभिनंदन। ऑलराउंडर स्लॉट है नंबर 6, नंबर 7, तुम्हारा कौन सा नाम रहेगा? So number 6, number 7, number 8. I think I've हाँ, picked out the all-rounders and Shahbaz Ahmed, Riyan Parag, and Rishi Dhawan. So reason, yeah. So reason I have taken the Shahbaz Ahmed, so no doubt. I don't think any person will have a doubt. I think in terms of the impact he has had with the bat and with the amount of the economy rate as a bowler, I would consider him as one of the best left arm spin all rounders right now in India after Akshar Patel. I don't. I mean, and Jadeja, of course. So after Shahbaz Ahmed will slot in without any doubt. Riyan Parag, what impressed me was his bowling. His bowling is gonna give us. See, he's a leg spinner. His so having a leg spinner in the top seven is gonna open or any unit, any batting unit or right, any 11, it opens up. And his bowling has been the key this season. Apart from he's one of those young generation players who can tonk the hard length, and we have right, seen it across when he played for RR, and he bats somewhere around 7-6 for RR. So again, right, keeping in mind that you need players to hit the hard length well, and also someone who can bat, say, 16th over, Rajat Patida gets out. You need someone to hit the hard length. Not necessary that right, Parag bats at number 7. You can send him like how Dinesh Karthik has been sent. So that's right. the reason why I went chosen Ryan Parag. Rishi Dhawan. So again, I mentioned Preya Mankad and I mentioned Shivam Dubey, but I went for Rishi Dhawan because his captaincy is gonna give my 11 a very big boost. He's been a captain of a winning team in Vijay Hazare Trophy and runner-up for SMAT. His bowling has improved a lot. I remember one of the tweets where Krishna mentioned that he went to the for the India A versus New Zealand A match, and Rishi Dhawan was actually bowling faster than Shardul Thakur. This is what he said, and I was actually observing his bowling this season, and he was bowling pretty good. He was 130s in pretty. 130s. He was bowling in 130s for sure. Yeah. So one and as a third seamer, especially who can swing the ball a bit here and there, he was opening the bowling until last season, and to this time he shifted his role more like an Harshal Patel. But he's someone I think can be a decent bet at number as a number three seamer. Yeah. Over to Kaushik. But yeah, yes, Kaushik, your number 6, 7, 8. 6-7, 6-7. I will give Shahbaz Ahmed and Sanvi Singh of Punjab. Shahbaz Ahmed, we don't need to mention. 200 का ऊपर run, then 160 strike rate, and bowling. He gives 7 wickets in the tournament, and he was the top match winner for Bengal. Mhm. Impact player भी रहे, and we saw what he did Right, in that I guess क्वार्टर फाइनल में नॉकआउट हुए वो 199 स्कोर बना वो ऋत्विक रॉय चौधरी से पहले शाहबाज का भी 50 आया था। वो एक डिफिकल्ट right. फेज था, पहले 10 ओवर में बहुत ही मुश्किल से रन बन रहे थे बंगाल के। सो या ही इज माय नंबर 6 एंड नंबर 7 संवीर सिंह। यहाँ पे आई वुड हैव लाइक टू ऐड जितेश also. I would like to mention his name now because Jitesh is a definitely one of the cleanest striker in Indian domestic circuit at the moment. But Of Sanveer course, Singh, and
हाँ, अभी अभी जब कौशिक जब बोल रहे हो तो हमारे यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन है, लाइव चैट के सेक्शन में काफी लोग बोल रहे हैं कि जितेश एट नंबर 5, इवन सनवीर का नाम लोगों ने लिया है, इवन शिवम दुबे का नाम काफी लोग ले रहे हैं कि शिवम दुबे ने जिस हिसाब से परफॉर्मेंस किया है, डिजर्व द प्लेस इन द 11, एंड इवन यशस्वी जायसवाल का एट नंबर 3 नंबर 4 लोग बोल रहे हैं कि या यशस्वी could यशस्वी have been जायसवाल, starting. इवन नीतीश राणा ऑल्सो, नीतीश राणा भी नीतीश राणा विद द बैट विद द बॉल. with the ball 11 विकेट्स उन्होंने लिए, if I'm not हाँ, wrong. So he yes, was also one name जिसका मेंशन हम कर सकते हैं. बट हाँ, संवीर सिंह को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि एक तो वो एकदम पूरा नया सीजन ही है बोल सकते हैं, एंड ऑल्सो ही प्लेड वन इनिंग्स अगेंस्ट हैदराबाद, आई थिंक इन द फर्स्ट गेम. पंजाब का जा स्ट्रगल कर रही थी, सेम जैसे बंगाल क्वार्टर फाइनल में स्ट्रगल कर रही थी, वैसे ही पंजाब भी स्ट्रगल कर रही थी ओपनिंग में. देन ही केम एंड ही प्लेड लाइक 90 बॉल 55. right, सो दैट वाज अ बिग इनिंग्स, एंड वो पूरे ग्रुप स्टेज में सिर्फ 2 बार ही बैटिंग कर पाए, एंड वन ऑफ हिज इनिंग्स वाज दैट 55 ऑफ 19. सो right, ये चीज मेरे को इम्प्रेस किया है. नॉकआउट्स में भी उन्होंने कैमियोज बहुत अच्छे खेले, क्योंकि पंजाब right. के ऊपर से एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है. उनको लास्ट के कुछ ओवर्स ही मिलते हैं, बट जब भी मारते हैं मतलब मार के ही जाते हैं, मतलब एक दो छक्के. यू वर इन द ईडन गार्डन, यू कैन ऑल्सो से मतलब वो बोल सकते हैं कि प्रूव है कि मैंने देखा है. बट या संवीर सिंह इज वन एक्साइटिंग नेम. लेट्स सी व्हाट ही कैन डू एट अ हाँ, हायर लेवल. सब इंटरेस्टिंग नेम्स. मैं यहाँ पे एक और नाम ऐड करना चाहूंगा. ऑफ कोर्स मयंक नागर ने जिस हिसाब से बॉलिंग की है, वी नो हिज बैटिंग prowess as well down the order. मयंक नागर वाज सुपर फॉर हिमाचल प्रदेश. ऑब्वियसली आकाश वशिष्ठ ने अच्छा किया है थ्रू आउट द quarters and semis, but consistency wise with the ball, Mayank Nagar was excellent for Himachal throughout the course of the tournament. अभी bowling lineup से में जाने से पहले हम लोग थोड़े बहुत क्वेश्चंस ले लेते हैं जो आए हैं हमारे ट्विटर उसमें. अगर आपको भी पूछना है कुछ, अगर आपको भी बताना है तो हैशटैग डोमेस्टिक अड्डा यूज कीजिए ताकि इजीली फिल्टर कर सके, हमें ज्यादा ढूंढना ना पड़े. तो एक क्वेश्चन पहले आया है, कैन ओके, कैन ये विजय हजारे ट्रॉफी रिलेटेड क्वेश्चन है अरुंधति का. कैन हिमाचल प्रदेश डिफेंड देयर विजय हजारे ट्रॉफी और सम अदर टीम्स लाइक कर्नाटका, तमिलनाडु, मुंबई विल विन दिस टाइम? Abhinandan, quickly, can Himachal defend their Vijay Hazare Trophy title? Yes or no? Yes, I think, I mean, why not? They have, I mean, SMAT wise, I thought, this was the weakest format along with their Ranji Trophy because there are T20 में आपको skill set अलग होती है. You have to hit the hard lengths, you have to have those hitters, correct type of a 11 जो होती है, you need everyone there, to perform. 50-50 overs, you have that time, a sufficient time. और आपके जो सम मैचेस स्टार्ट इन द मॉर्निंग एट 9 o'clock, तो आपके ऋषि धवन या आपके जो वैभव अरोरा, हाँ वैभव अरोरा, या वैभव सो अरोरा. वैभव अरोरा, या राइट, तो ये लोग आपके एक्शन पे आते हैं. तो ऑफ कोर्स आई थिंक हिमाचल प्रदेश कैन नॉट बी टेकन लाइटली फ्रॉम नाउ ऑन. इट्स गोना बी वेरी वेरी चाइल्डिश और फूलिश टू एक्चुअली काउंट देम आउट. Kaushik, you think Himachal can defend the WHK title? हाँ हाँ, एक्सपीरियंस काउंट्स, एंड अभी दिख रहा है उनमें क्योंकि एंड आकाश वशिष्ठ इज आल्सो इन फॉर्म, एंड कपल ऑफ मोर प्लेयर्स विल आई थिंक कम इन, जो हाँ, जो 50 विजय ओवर हजारे फॉर्मेट वाले प्लेयर्स जो हाँ है. हाँ, जो फिर, एंड आई थिंक इट सूट्स आल्सो, एंड ऋषि धवन हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन दिस फॉर्मेट फॉर लाइक लॉन्ग टाइम. Devashish Sharma का क्वेश्चन है, in this match Nitish Rana has scored with an average of 46 and 140 strike rate and even took 11 wickets. Do you think he can a good IPL can lend him the Indian team, as ICT also needs a left armer all-rounder and middle order batter? Nitish Rana, if he So gets, he has already played for India. वो Yes, श्रीलंका yes. कोविड टाइम में श्रीलंका में उनको चांस मिला था, बट कंसिस्टेंसी वाइज इफ ही कैन गेट अ गुड विजय हजारे ट्रॉफी, गुड आईपीएल वाइड बॉल में, तो आप देखते हो नीतीश राणा को एज अपकमिंग, मतलब अपकमिंग तो नहीं बोलेंगे नीतीश राणा को, बट ऑफ कोर्स इंडियन क्रिकेट टीम वाइज में आप देखते हो उनको टीम में इन फ्यूचर अगर अच्छा करते, क्योंकि तिलक वर्मा भी फास्ट ट्रैक किए जा रहे हैं स्पेशली ओडीआई में, तो तिलक वर्मा Yeah. आगे दिखेंगे. तिलक वर्मा है, शाहबाज है, देन शाबाश है. यू गॉट रिंकू सिंह जैसा प्लेयर, उनको तो देख ही नहीं रहे ये लोग. Right. सो नाउ जो ये लेफ्ट हैंडर का उन लोग का चल रहा है प्रॉब्लम, यू नेवर गिव दिस प्लेयर्स एनी चांस, स्पेशली रिंकू सिंह.
ठीक है, शाहबाज लोग ठीक है, थोड़ा नीचे खेलने वाले प्लेयर है, ठीक है, एट दिस लेवल बंगाल में ही कैन प्ले इवन एट 4, ठीक है, नो राइट। प्रॉब्लम। बट रिंकू सिंह वाज एब्सोल्युटली बेस्ट मैन टू बैट एट 5 फॉर इंडिया, जो ऋषभ पंत के साथ हम लोग इतना कैरी कर रहे हैं, एक लेफ्ट हैंडर चाहिए 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 करके। सो या डेफिनेटली नीतीश राणा भी वो कर सकते हैं, क्योंकि ही इज आल्सो लेफ्ट हैंडर। अगर वो खेल जाए तो डेफिनेटली अभी जो मैनेजमेंट है, दे विल डेफिनेटली ट्राई टू क्योर दैट प्रॉब्लम ऑफ लेफ्ट हैंडर, जो ऋषभ पंत के साथ हम लोग का प्रॉब्लम हुआ। अभिनंदन, यू थिंक नीतीश राणा कैन गेट इनटू द इंडियन टीम अभी जो जिस हिसाब से डेप्थ है उसके बाद भी? डिफिकल्ट है, वोंट लाई। रीजन बीइंग आई थिंक ऐसा कोई टूर्नामेंट आई थिंक आईपीएल का रहा नहीं है जहां नीतीश राणा ने खराब किया है, टू बी राइट। फ्रैंक। उनकी दिक्कत ये रही है कि उनके जो पहले 7 मैचेस रहते हैं वो बहुत जबरदस्त होते हैं, एक राइट। अलग लेवल पे जाते हैं, एकदम से वो डाउन हो जाते हैं। तो जो राइट। एक आई थिंक व्हेन आई जॉइंड ट्विटर टू 2018-19 में, there used to be a joke, Nitish Rana राइट। is of two halves, the first half of IPL, the second half of IPL, राइट। and he's not able to break that. He need if he actually gets IPL something similar to what Dinesh Karthik has done, then he will. And but for that to happen, he has to hit that patch where he can hit, say, for a couple of hundreds, because he bats at the top 3 and 4. He can do that. A couple of hundreds, I mean, couple of good 50s, get to that 400, 500 run mark in the IPL. Only that can actually break, because people know him. He's in the system. It's going to be very difficult. Tilak Verma scoring 300 in the first season, it's still, those people can be fast tracked, because, oh, wow, first season, 300, wow, they can fast track. But if you're like consistently in the system for, say, 10 years and you're scoring just at 300, 200, 250, 300, you'll be ignored. And I think that's what is happening with Rinku Singh as well. People are forgetting that it's last season, second half was the first time he got games continuously. But people are thinking Rinku Singh has been in the system for, say, long time. हाँ, हाँ, ट्रू। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। इवन एक क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, बट इट्स, हाँ, क्वेश्चन ही आप बोल सकते हैं। वैल्यूएबल डिस्ट्रीब्यूशन नाम है उनका, यूट्यूब में पूछा है, व्हाई नॉट कृणाल, व्हाई डिड कृणाल नॉट परफॉर्म वेल इन दिस ईयर? मतलब कृणाल का परफॉर्मेंस इस सीजन अच्छा क्यों किया? एनी पर्टिकुलर He रीजन यू थिंक? he ही डिड came वेल, back आई from थिंक an ही डिड वेल injury. इनिशियली, बट फिर थोड़ा सा पेड ऑफ हो गए थे। I mean, he came out of from an injury. He was हाँ, going good in Nottingham. I think he played for Nottingham, if I'm not wrong. He played the राइट। county season, and he was very good there. And injury ke baad, I mean, I don't understand. Twitter mein people forget that we are human beings, and you ट्रू। can't just hit the right patches. I think when Kumble joined as a coach, he did mention this one rule that, agar aap injured ho, we're not gonna drop you from the 11, but you're gonna play a domestic game, couple of games, prove your fitness, and then come into the 11. With the current system, the amount of matches we play, it's not possible. But this is something I think even the selectors will have to think about. Good point. Good point. So let's move to our next lot of players in this team of the tournament. हमने numbers 7, 8 तक बात कर ली है, right? Yep. हाँ, अब 9, 10, 11 चाहिए। तो go Okay. ahead, So कौशिक। Yes. Kaushik, yeah. हाँ, 9, 10, हमने 11 नंबर 7 तक बात की है, 8, 9, 10, 11 चाहिए। लास्ट मैंने के 4 8 प्लेयर्स। कर लिया, 8 कर लिया। ऋषि धवन हम लोगों ने 8 बोल दिया था। अच्छा, राइट, ऋषि धवन तुमने बोला था, हाँ, राइट। मैंने नहीं बोला, आई थिंक मिस कर गया। या ऋषि हाँ, धवन, ही विल बी माय कैप्टन। सो ही हाँ, इज और विकेट भी लिए हैं एंड बैटिंग भी ऑन नो। सो नेक्स्ट आई विल गिव यश ठाकुर, वैशाख चंद्रन एंड कवरेप्पा। कवरेप्पा फर्स्ट सीजन एंड कर्नाटका का नो सिद्धार्थ एक, कॉल। हाँ, मैंने मिस आउट कर लिया वो। आई थिंक यश ठाकुर कैन डू व्हाट सिद्धार्थ कॉल was doing for पंजाब दिस सीजन। यश ठाकुर एक बहुत ही एक्साइटिंग नेम है, लास्ट कपल ऑफ सीजन से परफॉर्म कर रहे हैं ऑल फॉर्मेट। एंड विजय हजारे में भी लास्ट ईयर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। अभी विजय हजारे आ रहे हैं, मैं अभी बोल रहा हूँ, यू वॉच आउट फॉर हिम इन विजय हजारे एज वेल। सो यश ठाकुर वो मैच भी जिताया, वो लास्ट ओवर जो जिताया था विदर्भ के लिए नॉकआउट्स में। राइट। देन
Vaisak Last over Chandran, matchup. Right. yeah, Vaisak Chandran is one of the most exciting name we talked in here in domestic अड्डा. केरला Hmm. के आगे बढ़ने का बहुत बड़ा एक रीजन थे. I don't know why he only won over in that quarter final, but he is a player to watch out. And 12 विकेट निकले थे उनके ग्रुप स्टेजेस में, so that's a big achievement. And the final name I was saying Kavrappa. Kevrappa. हाँ, so कर्नाटका का वो Second highest wicket taker, right? Second highest wicket taker शायद 18 along विकेट with से है. Vishak and all. Vishak मैं नहीं ले रहा हूँ, आई एम जस्ट मेंशनिंग हिज नेम. वो कर्नाटका का ये हाँ, दोनों पेस डियो है, इन लोगों ने बहुत ही अच्छा वो किया. कौशिक भी है एक जो नए बॉल से खेल करते थे एंड बाद में इम्पैक्ट प्लेयर रिप्लेसमेंट right, प्लेयर हिसाब से चले जाते थे. तो दिस कर्नाटका right. पेस अटैक को बहुत ही अच्छा एक एडिशन मिला है. कवरेपा विशक एंड कौशिक पहले से ही थे, बट कवरेपा ने जो आके मचाया है, क्योंकि वो कर्नाटका का भी लोकल लीग में ही वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर और सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर. यहाँ पे भी आके ये ऐसा खेल गए. सो डेफिनेटली मे बी अगर विजय हजारे अच्छा कर गए तो कॉन्ट्रैक्ट ऑन द लाइन. देखते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि नहीं. बट अभिनंदन, तुम्हारे 8, 9, 10, 11 कौन रहेंगे लास्ट 4 प्लेयर्स? So पहले मैं वैशाख चंद्रन को ही लेने वाला था, but then I think I'll go with Tanush Kotian. Reason being his batting abilities has been, something understated, I would say. Not people mention it, but रणजी में भी जब वो फाइनल पहुंचे हैं उसमें तनुष कोटियान की बैटिंग का भी बहुत बड़ा हाथ था. He's been among the wickets along with Shams Mulani. I think वो एक चक्रव्यूह रच लेते हैं and players get into it. Being Indian domestic players, you're still as an off spinner you're getting wickets and then you're batting and helping the team win. He's shown a lot of temperament. I think Tanush Kotian deserves a place. Vaishak Chandran, yes, I would love to see him grow more into probably in the next VHT and other. One interesting name for sure, but yeah, being an off spinner or a left arm spinner, you need to develop your batting more. The more you get into the higher hierarchy, they will ask you or expect you to become a bit better batter. The bowlers, the pacers. I know I'm in my 11. I just chose 3 pacers. The reason being, I felt the spin all rounders and the spinners who were there, they did really good job. Could not ignore them, and I hope my team plays in subcontinent. But coming to the pacers, Yuvraj Singh and Yash Thakur. The reason why I've chosen both of these folks, मेरा जो 11 मैंने बताया कि वो एक spin heavy है. So I've actually picked up 2 pacers, genuine pacers who can hit the deck, hit the hard length, ball yorkers. So which means that and with Rishi Dhawan's slow ball control, I think I am able to cover up those filling holes with the pacers I have. Yuvra and I just one correction I would like to do for Kaushik is Kaushik mentioned Siddharth Kaul ka kaam Yash Thakur karenge, but I think Yash Thakur is more of Umesh Yadav. I mean, a bit more of an I would say more of a Siraj who balls pretty hard length, who loves to hit hit the deck hard. Probably more like a Kuldeep Sen. If Bharat sir is listening me, he'll try to correct me here. So I think this is. I thought Siddharth Kaul का वो death overs का जो role है, that Yeah. I think So Yash Thakur can do, because Rishi Dhawan is there, Kavrappa is there, they will start in the power play, and Vaisak Chandran yeah, is also there. So Yash yeah. Thakur will start from the middle over enforcer, and he will end it as the death over. But what I liked about Yash Thakur is in terms of the Yorker accuracy and the amount of Yorkers he puts in with Yuvraj Singh, I think both of them are very, very good in that aspect as well. Of course, I mean, some good names there, but of course, Siddharth Kaul being the highest wicket taker वो miss out हो रहे हैं. यहाँ पे मैं एक और नाम बताता हूँ. Obviously not consistency wise, but कुछ जगह में बहुत अच्छे performances थे. बलतेज सिंह का नाम मैं यहाँ पे लूंगा. He was very very good in there. And of course, अगर हम एक और पेसर की बात करें, के आसिफ was very good for his team. के आसिफ ने अच्छा आउटिंग रहा है उनका. Of course, I expect more wickets from him, but decent आउटिंग रहा है उनका. But of course, अगर 2 डेफिनेट नाम्स की अगर मैं नाम की बात करूंगा तो बलतेज और सिद्ध कौल दोनों का नाम आना चाहिए. I think it's tough. It's tough to choose, 11 players out of a big tournament. I think we've been fans of so many players. Like
again, Akash Vashisht is one player. I feel bad that I missed out his name. With Shahbaz there, it's really tough to fit in Akash We as a can batter. we can name impact player. No, we can name him as Yeah. the impact player. So If we if instead you of, I if think, you ask Even if you Shams ask Mulani for that matter. Shams Mulani was yeah. excellent with the if bat, you with the if ball you ask for if Mumbai. you ask me about if you ask me about impact player, then Akash Vashisht is. I don't have Riyan Parag in my 11. So Akash Vashisht, Uh-huh. Riyan Parag. If there is a collapse early on, then Riyan Parag comes in with Tilak Verma. These two guys can play any kind of can handle any kind of pressure situation. So Riyan Parag comes in, then Akash Vashish comes in when we will need a extra batsman at the end, and someone like Aman Khan as well who can swing the ball. So Mm-hmm. these are the impact Aman players Khan as was well. really good. Aman Khan was really good. मतलब in patches he did the job for Mumbai. But before wrapping up, मैं अभिनंदन कौशिक दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने 11 के नाम बता दो ताकि सब कंसोलिडेटेड रहे. कौशिक यू स्टार्ट. मेरा 11 प्रभ सिमरन थे, पृथ्वी शॉ एट 3, समर्थ व्यास एट 4, पतिदार रजत पतिदार of मध्य प्रदेश at 5, Tilak Verma of Hyderabad. At 6, I talked about Shahbaz, Bengal, obviously big superstar. Then 7 पे Sanveer Singh of Punjab. Watch out for him. बहुत ही unknown name है. And number 8, Rishi Dhawan. Number 9, number 10, 11, Vaishak Chandran, Yash Thakur, and Vidwan Kavrippa. Kavrippa is अभिनंदन from बिफोर Kannada. आई गो. हाँ, अभिनंदन बिफोर आई गो टू यू, हमारे यूट्यूब लाइव चैट में अभी आउटरीच चल रहा है कि सिद्धार्थ कौल किसी के टीम में कैसे नहीं है. So, I mean, Kaushik ने impact players name किए हैं, तो I'll also name couple of them. I या think मेरे केस में आकाश वशिष्ठ और सिद्धार्थ कौल will be my impact players. Reason being, I would prefer having someone like Siddharth Kaul bowling up front, swinging the ball both ways. So he's one guy that I would love to have an impact player for sure. Then आपने क्या पूछा था अगला क्वेश्चन? पूरा पूरा 11 का नाम बताओ. Okay, सारे yeah. players. So Shaw, Samatvyas, Tilak Verma, Rajat Patidar, Mohammad Azharuddin of Kerala, Shahbaz Ahmed, Riyan Para from Assam, Rishi Dhawan, again Himachal Pradesh. Then you have Tanush Kotian, Mumbai, Yuvraj Singh, Yash Thakur. The impact players, again Akash Vashisht and Siddharth Kaur. सिद्धार्थ. कौशिक हमारे पास कौशिक अभिनंदन हमारे पास वरुण गिरी का एक क्वेश्चन है. अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए मैं ले रहा हूँ बिफोर रैपिंग अप दिस सेशन. Also if you can talk about some instances where impact player won the match for the team out of nowhere or backfired का तो मेरे को क्लियरली याद है, नॉकआउट मैच में हुआ था. हरियाणा. बट हाँ, हरियाणा. बट अगर हम बिल्कुल फर्स्ट इम्पैक्ट प्लेयर जो यूज हुआ था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, ऋतिक शौकीन को लाया गया था. दे वॉन दैट मैच. So वो भी काफी इंटरेस्टिंग था. ये सभी रन. I think I did mention one of the games where Nikhil Gangta came in. हाँ, yes, of course. वो match में I think Saurashtra were, I mean Himachal Pradesh were 30 for 4 or 30 for 3. Nikhil Gangta comes in and scores a 50. उसके I think उसके आसपास के जो players थे उन्होंने कोई 20 या 25 भी क्रॉस नहीं किए थे. So that match we Himachal ended up scoring 160 or something and were able to win that match. So I think for me that was one of the memorable innings that I saw as an impact player. राइट राइट. इंटरेस्टिंग नेम निखिल गांगटा का. स्पेशली उनका भी अच्छा टूर्नामेंट रहा है, काफी अच्छा Yes. टूर्नामेंट रहा है निखिल गांगटा का, जिस स्ट्राइक रेट से वो खेलते हैं. Yeah, I mean, Yes, मैंने कहा ना, I think picking 11 it becomes a bit difficult because you have so many names. right. I think have been a big fan of Himachal Pradesh as a team. And अगर आप विजय हजारे ट्रॉफी की बात कर रहे हो, किसी ने पूछा भी था, तो do look out for Shubham Arora, who scored 100 in the final last season. So he's also going to come back into the scheme of things. And Prashant Chopra, he's been the wall for them at the top of the order. So even in this Vijay Hazare Trophy, he made sure जो early moment होता है उसपे he became the wall, kept a strong hold. तो वो ऐसे players काफी है. Himachal Pradesh is gonna be a well oiled unit like Saurashtra or Vidarbha.
You don't have gonna. I mean, that's something we're gonna look out for. Yeah. Absolutely, Kaushik. Your instances where impact player either changed the match or completely failed. तुम्हारे नाम बताओ. हाँ, वो सौराष्ट्र का मैच था जहाँ पे शेल्डन जैक्सन स्कोर्ड रन्स दैट आई थिंक हिज नेम वाज विश्वराज सिंह जडेजा that impact player changed the game completely against Kerala, I think. Yeah, Kerala, I think. Yes, And yes, yes. another one big performance came from JNK all-rounder Vivrant Sharma against Arunachal. Group stage में था हाँ, जो 4 विकेट लिए थे, आई थिंक ओनली इन 3 ओवर्स एंड ऑल. एंड सैयाज पाटिल एंड वेल मुंबई के लिए हाँ, आए थे. वो बिग of course. मैच था वो अय्यर के साथ जो पार्टनरशिप. ऐसे कर्नाटका ने भी बहुत यूज किए हैं. बस यही है, अभी बात करने जाएंगे तो बहुत निकल आएंगे. ऑफ कोर्स. तो हमने लगभग सारे सवाल ले लिए. अगर मिस हो गया हो कोई क्वेश्चन तो फिर डू पार्डन अस, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस रहते हैं, इतना सब डिस्कस करना रहता है. तो इट बिकम्स टफ. बट गाइस, अब विजय हजारे ट्रॉफी स्टार्ट होगा. तो अभिनंदन, कौशिक, इवन जोयदा भी ज्वाइन करेंगे हमें विजय हजारे ट्रॉफी के प्रीव्यूज के लिए. काफी सारे टीम्स हो जाएंगे फिर से, तो इट विल बी अ बिट ट्रिकी टू फॉर अस टू कवर एवरीथिंग, बट विल ट्राई एंड कवर as much as possible when it comes to Vijay Hazare Trophy. Of course, World Cup खत्म हो जाएगा तो things will become a bit easier. But at the same time, yes, we will try our best to give the best coverage of Vijay Hazare Trophy. We have a couple of interviews lined up in the next coming weeks before the Vijay Hazare Trophy. So do keep an eye on Red Sports channel and keep watching Red Sports. Subscribe to our social media platforms, Twitter, Instagram, Facebook, और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कौशिक है, अभिनंदन है, मैं हूँ. हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया में है. दे आर गियरिंग अप फॉर द सेमीफाइनल्स ऑफ द टी20 वर्ल्ड कप, फाइनल फॉर द टी20 वर्ल्ड कप. उसके बाद फिर इंडिया न्यूजीलैंड जाएगी, बांग्लादेश जाएगी. तो प्लेंटी ऑफ क्रिकेट एक्शन इज कमिंग योर वे. एंड ऑफ कोर्स एक सोलो वीडियो आने वाला है ऑन आईपीएल डिटेक्शन. मैंने आज एक छोटा सा न्यूज बोल सकते हैं उसको, न्यूज बोल सकते हैं, यशदुल बीइंग रिटेन्ड बाय दिल्ली कैपिटल्स. या इट वाज अ गिवन. It was obvious. I think it was a given. They didn't. I mean, Delhi Capital under JSW have shown a lot of stability, and Yashdul, the way he has had his domestic season, I don't see him getting a game as such this season as well. They have a set 11, but yeah, I do expect. I mean, there will be a surprise in the role Pant plays as a batsman. I see him opening the season with the and I mean that's what my assumption or my analysis is. But hopefully he does. Looking forward for that as well. और एक और न्यूज मैं दिल्ली कैपिटल्स फैंस के लिए दे देता हूँ. एक बहुत बड़ा ऑलराउंडर रिलीज होने वाला है. आई वोंट नेम हिम नाउ बिकॉज दैट इज नॉट completely finalized, but in the next couple of days I'll try and get that news for you. कौन है वो player? Keep guessing. Use hashtag domestic Adda for all your questions regarding Vijay Hazare Trophy. Thank you Abhinandan, thank you Kaushik for joining. Great Thank you. playing 11. We discussed our team of the tournament. आप भी अपने team of the tournament comment section में लिख के बताइए and keep following Red Sports. Thank you. Thank you.